Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone present here. So, welcome everybody to the Star Union Dai-ichi's Expert Speak session. Today's session will give you insights into Star Union Dai-ichi's journey, culture, and the career opportunities for freshers from various backgrounds. So, we are joined by Mr. Ashish Parab, who is the head distribution HR at Star Union Dai-ichi's Life, who brings over 14 years of HR experience across industries. Over to you, Mr. Ashish. Thank you, Vrishali, and many thanks to all the people who have joined this webinar. And I'm sure we'll make this interactive. You all are already typing in the comment box. We will answer all the questions, but keep your reactions coming to the comment box so that we also get feedback on what to talk and etc. As Roshali mentioned, my name is Ashish Parab. I head the distribution HR. For some, it will be a question: what is distribution HR? So, distribution in an insurance parlance is equal to the uh, sales function. So, I will use Hindi and English as a language for everyone to be comfortable. Uh, so like some of the industries don't have sales directly per se, like Coca-Cola. If you all know the brand Coca-Cola or Pepsi, when they manufacture their products, they don't go and sell it themselves. They sell it through, you buy it from a retail shop, your kirana shop, or a mall, food courts, or at airports, or whichever shops you go. So those are the distributors, and Coke is the manufacturer. So similarly, insurance products are also similar. You must have seen that or experienced LIC agents in your, you must have heard from your parents or grandparents, etc., or your uncle, aunties about LIC agents. So LIC agents are basically not employees of LIC; they are the distributors of LIC, and LIC as an organization is the one who makes the products available, who processes it for you, etc., etc., and who also trains all these distributors and hires all the distributors to gather a big reach in the industry. So similarly, all the life insurance companies, I took an LIC because LIC is the first life insurance company of India and is a government-owned life insurance company. I took that example. But similarly, there are other many private life insurance companies, and they also operate on the same model of distribution. So that's why sales and distribution are same. Just for your understanding. Uh, so welcome to this session again, and I remember my time when I was out from graduation and how difficult it was back then, probably around 20 years back now, to find a job in the open market. And though I'm from Bombay and held from a okay decent college, um, came with decent communication skills, etc., etc., and decent passing marks and percentage, but still finding a job itself or getting to the level of interviews or giving CVs itself was very difficult, knowing which portals to use, etc. Today, it has changed a lot. My first job, I will tell you, was of a courier boy with Blue Dart. I had a bike and I graduated, and then I was delivering couriers through Blue Dart. My second job was with Nokia that time, which was a mobile handset manufacturing organization. I was handling a repair center for them in one of the localities in Mumbai. So, so difficult to find jobs after graduation was the that time scenario, and I now feel envious about the kind of opportunities that graduates get through corporates, and how also corporates are also looking at freshers as a great uh, graduate freshers specifically. Postgraduates are always there, but graduate freshers also, who can come join them and also build a career with them, and also with that, along with that, also complete their even education, further education.
एंड सो सिमिलर थिंग इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस. आज वही बात करेंगे कि आप अपना करियर एक अच्छे कॉर्पोरेट के साथ कैसे चालू कर सकते हैं. कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे करियर चालू करना चाहिए और आई शुड गो फॉर फर्दर एजुकेशन, but some of you don't know that both can happen together. While you learn, and learning is the most or learning on the job is the most valuable experience or education that you get. While post graduation sometimes is important, but being on job also and getting that kind of education which is happens on job is more valuable. हमने अपने एजुकेशन में काफी कुछ सीखा रहता है, एलिमेंटेबल, पाइथागोरस थियरम और क्या नहीं, सब कुछ काम नहीं आता, बट ऑब्वियसली जो जॉब पे सीखते हैं वो सब कुछ काम आता है. दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So combining both education and experience is very very important. Getting the first, you will always see a lot of jobs which are available for experienced candidates, but who will give that first experience is always the question. And that we want to be an organization, we want to be that managers in the organization who are your first managers, who is your first organization, who gives your first experience in the whole corporate world. And though it's a financial sector, but the learning is easy and it's not a difficult uh, place to be in. And from any field if you come, it doesn't mean that you should come from okay commerce background ke ho to hi finance mein kar sakte ho, aisa kuch nahi hota. But everyone is welcome to the kind of opportunity that be it from engineering or be it from arts or be it from any other field that you are coming from. But this sector, when you come over here, there is a different learning that starts, and after that, you have to get a different experience on the job. So that is what we are going to share today. I will talk some bit about the organization, and then we'll move to what is there for you as candidates who are looking for working with a good corporate and to start with a good corporate. There are big corporates and there are mid-level corporates and there are small corporates who are just starting. And I would say in this sector very particularly, we are those mid-level corporates. In the private life insurance companies, there are like LIC, as I said, started many years back, around independence. And then in around 2000, after 2000, the market opened for private life insurance companies. And some companies started in 2001 2, and we started in the second generation, which is in 2009. So you must be knowing some of the major companies like Kotak Life Insurance, HDFC, Tata, etc., etc. They started in 2001, and so they are the major companies, and they are like oceans. But we are the growing companies who started in the second generation, and which are the right place to be, because these organizations which are second generations offer the right kind of platform to you, right kind of learning opportunities, and right kind of growth opportunities also for you. Uh, Otherwise, in large organizations, it will be so large that somewhere people get lost. But in organizations which are mid-size and growing, where you trust that the organization will always keep growing, it is not a new organization. The culture may not change uh, overnight like startups do. So where you trust the organization, but also the flexibility is there that it is not a huge organization, that I will have a lot of opportunities to grow. So ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना हमेशा अच्छा रहता है, and that is the kind of organization SUD life is. SUD life, is um, comes with, again, the life insurance sector. SUD life is part of the life insurance sector. There are 62 insurance companies in India, out of which 26 are life insurance and 36 are non-life insurance. Non-life में होता है general insurance, health insurance, सब etc etc. India is 10th largest life insurance market and 15th largest non-life insurance market in the world. And India, as you know, if you have seen, हम सब जगह पे, if you see Twitter, news, Insta, everywhere you see, India is one of the fastest growing economy in the uh, whole world. And similarly, insurance market in India
is also one of the fastest growing insurance market, and there are many international players who have joined different Indian companies to be a part of this market, and they see a lot of opportunities that this market will provide to them. For insurance, IRDAI इज द रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आरबीआई होता है बैंक के लिए जो सब कुछ रेगुलेट करता है, या फिर सेबी होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए जो सब कुछ रेगुलेट करता है, वैसे ही आईआरडीआई होता है इंश्योरेंस के लिए, जो दोनों चीज रेगुलेट करता है, लाइफ इंश्योरेंस भी और जनरल इंश्योरेंस भी। एल आई सी मैंने जैसे बताया आपको, एक लौता पब्लिक कंपनी, पब्लिक यानी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एंड देर आर 6 पब्लिक नॉन सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज है जो नॉन लाइफ में डील करती है, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस एक्सेट्रा, वैसे 6 कंपनी है, और लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक कंपनी है। अभी आप देखोगे कि कितने लोग और हाउ मेनी पीपल इन अ कंट्री आर जनरली having life insurance. Like if you see Taiwan at the bottom is actually at the top. They are having 14.8% people covered under life insurance, and United States having around 12%, South Korea 11%, etc., etc., like that. And India is at around 3.7%, and so there is a great opportunity. Even 3.7% of the population that we are at one of the largest population. तो वहां से लेके to even grow 10% will be a huge jump. And companies itself, जब ये इतना बढ़ेगा तो कंपनी सारे 60% ग्रोथ पे चलेंगे. So that is the kind of opportunity that India has in terms of life insurance sector. It has a lot of scope to even welcome new companies in the this thing. जैसे अभी करंट नए कंपनी भी काफी आए हुए हैं दोनों मार्केट में, जैसे एक्को आपने देखा रहेगा, और डिजिट नाम की कंपनी वैसा देखा रहेगा आपने, तो काफी नए कंपनीज भी आए हुए इस सेक्टर में, और ये सेक्टर इतना बड़ा है कि बहुत सारे कंपनीज और ले भी सकता है, तो कभी ज्यादा कंपटीशन की तरह नहीं देखा जाता, बट इट इज जस्ट दैट मोर पीपल आर कमिंग एंड मोर पीपल आर गेटिंग इंश्योर्ड, विच इज अ गुड थिंग. गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए, और रेगुलेटरी बॉडी जो आईआरडीआई है उसको वो भी बहुत कुछ कर रही है. जैसे SUD Life also has, two states. One is Jharkhand, other is Goa, which is assigned to SUD Life for growing life insurance penetration over there, so that more people are covered. And similarly, more all other organizations are given some states to increase the penetration of life insurance. So that is again a great opportunity, or you can see that the government focus on covering people, because specifically this year or this month itself, you must have seen a lot of incidences that has happened, the Air India plane crash, etc. So that life is uncertain and anything can happen anytime. So it is important that the family members are covered well. I know that life is more important than money, but when life goes, money supports also. That is also very important, so that it should not happen that one earning member of the family who has lost his life for some reason, uh, the other people in the family should not suffer, and they should have an opportunity to live or maintain the same standard of life. And that is what life insurance provides. You buy a product on a small premium of say 5,000, 10,000, whatever, and you get a big coverage over there also. For a term life insurance, with a pure life insurance policy, you can get a coverage of 1 crore, 2 crore at a small premium. So that is important, that that financial is providing, and that is what government is also focusing on. जैसे अभी एयर इंडिया क्रैश में Tata, because it owns, they gave 1 crore. But if there is a life insurance policy of all these people, they will also have that support also, which is also important. And 1 crore is a small amount, and it needs, because for a lifetime, you need a lot of support. COVID-19 was also one of the turning point where, everyone realized the importance of life insurance for them and family members, and people started insuring. What is different from life insurance से जनरल इंश्योरेंस, कि हम लोग
हमारे पास बाइक होती है, गाड़ी होती है, हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्योंकि व्हाट वी फील इज कि व्हेन वी गो आउट देयर विल बी अ कॉप स्टैंडिंग एट द सिग्नल, और वो हमको पकड़ लेंगे तो चालान कटेगा। उसलिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, पर हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास उनकी खुद की गाड़ी रहती है, बाइक रहती है, जो भी रहता है उसका इंश्योरेंस होता है, पर खुद का इनफ इंश्योरेंस नहीं होता, या फिर इंश्योरेंस ही नहीं होता। दैट इज वेरी सैड एज अ lifestyle that we live, or what as a country that we are doing. And that is the situation that life insurance companies are trying to change, that what is more important, that bike or that car or your life? And so what should be covered and what is important? Then that is the focus of life insurance sector. Who is SUD Life? SUD Life stands for Star Union Dai-ichi. तो यहाँ पे आप तीन कंपनी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। वन इज बैंक ऑफ इंडिया, उसका सिंबल है स्टार, वहां से आता है स्टार यूनियन दाइची का स्टार। देन देर इज यूनियन बैंक, वहां से आता है यूनियन। एंड दाइची लाइफ इज अ जापानीज कंपनी। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक both are 100+ year old banks and the major banks of India. They have started this company along with Dai-ichi Life, who is also older than Bank of India. और उन्होंने ये कंपनी, they all three together started this company. So out of that, Dai-ichi Life is the oldest company. It comes from Japan and is one of the largest life insurance company in Japan, and also one of the top 10 life insurance company in the whole world. So they have presence in more than 80 countries across. So that is what these three big giants have come together to form this company, which is Star Union Dai-ichi Life Insurance Company. Where are we? We have 171 branches across India. We have around now 7,000 odd employees, uh, tagged along with us, and many more agents and etc. are also working with us. We have around 12.5 million customers in India, and 17,000 distribution branches along with Bank of India, Union Bank, and etc. Where we have tied up. Those are our distribution centers, and through those, this thing. And we have 171 branch offices across India. So we are present in many cities, in town B, town C. यूपी में जाओगे, हम अयोध्या में प्रेजेंट है, हम बलिया में प्रेजेंट है, हम वाराणसी में हमारी बड़ी ब्रांच है, महाराष्ट्र में हम यवतमाल में प्रेजेंट है, चंद्रपुर में प्रेजेंट है, Kankoli में present है. You know, I'm talking about smaller places. Obviously, all the big cities like Bombay, Pune, Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Trivandrum, etc. are already covered. But I'm talking about in the smaller cities also we have presence. So we are in more than 150 cities across India. Many awards as an organization that we have received. We are a great place to work, which is a certification that some companies receive after a thorough survey that is done for the organization, and people talk great about working with the organization. So it talks says that कि इस कंपनी में जॉब करना बहुत ही अच्छा रहता है। ये आप लोग जब जॉब करोगे तो आप देखोगे हमेशा कि जिनके पास ये सर्टिफिकेशन रहता है ग्रेट प्लेस टू वर्क का, वो काफी अच्छी कंपनीज रहती है, उनमें एम्प्लॉयज काफी खुश रहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब हम कहीं जॉब ढूंढते हैं तब। उसके साथ गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला है हमको यही साल ट्रेनिंग के लिए भी। गोल्डन पीकॉक एक बड़ा ही ऑस्कर है ट्रेनिंग का इंडिया में, मैं यही कहूंगा। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट वी हैव गॉट दिस ईयर for training. So our focus on getting people like you as freshers and training them to be successful managers, leaders in the organization, and successful employees of the organization is very important. And that's why when we have done it very successfully, we have received that kind of award and recognition from the industry. Apart from that, what you see on the screen, there are many awards that we have received in the last 3-4 years that we have projected. For the whole journey, there are many awards which couldn't have fit in a screen. Like I was talking about, your growth is what we commit to.
and that is a key focus area for us as an organization, and that's why we talked about training programs and the great place to work etc. और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कंपनी में है जिसका आप फायदा उठा सकते हो. ऑल द एम्प्लॉयज हु ज्वाइन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. जैसे वृद्धि, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा है, वो फील्ड पे जो आपका रोल है उसके लिए होता है, जहाँ पे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट प्रमोटेड क्विकली. यू नो आप 6 महीने में, 1 साल में प्रमोट भी हो सकते हो, प्रमोशन हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, बोनस मिलता है. सो दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अंडर वृद्धि, जिसके थ्रू शिक्षा शिक्षा में आपको बता रहा था कि जो अ, आप यहाँ पे एज ए ग्रेजुएट ज्वाइन करोगे, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो. हमारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के साथ टाइप्स है, जिनके साथ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो while doing your job, and that is very valued also in the industry. So good institute, top institutes are tied up with us. Apart from that, you can also do courses in many other institutes which are not even tied up with us. हमारे यहाँ पे कुछ लोग IIM से भी कोर्स कर रहे हैं, काफी लोग मणिपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और काफी सारी बिट्स पिलानी जैसी इंस्टीट्यूट है, वहां से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. सो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप पढ़ भी सकते हो. So we are talking about higher education. So that also you can continue while earning and while getting that relevant experience on the job. Apart from that, there are many learning opportunities, and also there are opportunities to get international job postings also. हमारे यहाँ से काफी सारे लोग जापान, वियतनाम, सिंगापुर, लंदन ऐसी जगहों पे दाइची के ग्रुप कंपनीज में पोस्टेड भी है. वहां पे जाके ट्रांसफर भी मिला है उनको, और वो वहां पर भी करते हैं, और यहाँ पे हमको जाने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है एज अ रिवॉर्ड या एज अ प्रोग्राम के अंडर भी. ये जो हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए आज आप सब यहाँ पे आए हुए हो, एंड ऑल ऑफ यू टुगेदर आर interested in this. What is this program? Now we'll talk about that. We started this program last year when our great Prime Minister Modi ji, thought about this idea that, you know, we should, all organizations should, encourage freshers, graduate freshers to be taken as apprentice in their organization and give them an opportunity to learn and experience the on-job training and on-job की कैसा होता है, so that they are working similar to all other employees and getting an experience, and then you also help them build their career with the organization. So that is what we are exploring, that since last year, in fact, when they started, we took this opportunity, and we are the organization, I will tell you, we have in the last 15 odd months taken more than 1,000 apprentices with us, and the next best company in the industry of life insurance company has not even taken 100 yet. So we are way ahead in giving opportunities to freshers than any other organization. um, Currently we have 400 apprentices active. Many are converted with us into full time employees. पहले apprentice आते हैं, फिर उसके बाद full time employees बन जाते हैं at a very good salary, incentives, etc. So, एंड काफी लोग ये एक्सपीरियंस का फायदा उठा के दूसरी जगह कई जाते भी है, या फिर उनका एजुकेशन भी कंप्लीट करते हैं, किसी को अगर बाहर जाके एजुकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग अच्छा खासा अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, तो पैसा कमा के एजुकेशन भी कंप्लीट करते हैं. सो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, but there are great opportunities that you can get converted into full time employment also. अगर if you take this opportunity, and we want all of you to do that, then what is in it for you? मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? At the, मैंने जैसे बताया, you learn and earn at the same time. There is a lot of training that happens. There is a specific program which is a 21-day induction program, which has classrooms and virtual plus on the job training. um, then this program is very specifically designed for the freshers also. Then you are part of the fastest growing life insurance company. हमारे लास्ट 4 साल का एवरेज ग्रोथ इज मोर देन 30%. While the industry is growing at around 9-10%, we are growing at a very fast rate than the industry. As I said, we are that midlife
ऑर्गेनाइजेशन जो एकदम पुरानी भी नहीं है और एकदम नई भी नहीं है, तो नए वाले को ट्रस्ट करना मुश्किल रहता है कि ये कितना टाइम चलेगी, नहीं होगा, नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। और हम एकदम पुराने भी नहीं है कि इतने बड़े हो गए कि फ्रेशर्स आके गुम जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में। So we are the fastest growing. We are focused on the freshers. So it is the right career opportunity to be with such an organization where you get to grow pretty fast. Attractive, speedy compensation and growth भी यहाँ मिलेगा. I will tell you last एक साल में हमने लगभग जो अप्रेंटाइज रहते हैं वो काफी अप्रेंटाइज हमारे फुल टाइम एफएलएस में बन गए, फुल टाइम एम्प्लॉयज में बन गए। उसमें से भी काफी जो हमने फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं उसमें से हमने लास्ट एक डेढ़ साल में लगभग 300-400 लोगों को हमने मैनेजर्स बनाया है। तो वो जो आते हैं 20,000 की सैलरी पे, 15-20 हजार की सैलरी पे आते हैं अप्रेंटाइज बन के, वो लगभग 2-3 साल में ही लगभग 7 लाख के पैकेज तक भी पहुंच जाते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर ऑन टर्म्स ऑफ पैकेज ओनली। सो यहाँ पे रोल्स क्या है, तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के रोल्स है। वन इज दी एजेंसी डिपार्टमेंट में है, दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर के। ये दोनों भी जैसे मैं बता रहा डिस्ट्रीब्यूशन के रोल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेल्स का फंक्शन होता है, उसके रोल्स है ये। पर बड़े ही एक्साइटिंग रोल है। अब एजेंसी में यू ऑलमोस्ट बिकम अ मैनेजर फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब अप्रेंटाइज ही बनते हो तब से आपके पास एक टीम रहती है जिसको आप रिक्रूट भी करते हो, जिसको आप मैनेज भी करते हो, जिनके थ्रू आप बिजनेस भी ड्राइव करते हो। और एक होती है रिलेशनशिप मैनेजर, जहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और ऐसे हमारे एक दूसरे पार्टनर्स है उनके साथ काम करके उनके कस्टमर्स में, उन ब्रांचेस में जाके आप कस्टमर्स के साथ काम कर सकते हो। तो हमारा ऑफिस सिर्फ एसयूडी का ब्रांच ऑफिस में आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको बैंक ब्रांचेस जो आपने देखा रहेगा आपके यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन ब्रांचेस में भी आप मोस्टली प्लेस रहोगे अंडर दिस मॉडल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। एजेंसी डेवलपमेंट में आप हमारे ब्रांचेस में पोस्टेड रहोगे। और क्या मिलेगा आपको पहले ही जब ज्वाइन करते हो आप, आपके पहले 6 महीने अप्रेंटिसशिप पीरियड के रहते हैं। उस अप्रेंटिसशिप पीरियड में आपको 2.16 लाख टोटल अर्निंग मिलती है। ये आपका फिक्स्ड पे रहता है, 2.16 लाख आपके हाथ में आएगा हर महीने 18,000 के तौर पे। एंड आपके उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगर सक्सेसफुल कंप्लीट करते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिल सकता है। आपको 7वें महीने से जब आप कंफर्म हो जाते हो तो आपकी सैलरी डायरेक्ट 3.2 लाख मिनिमम हो जाती है। उसके ऊपर भी कर सकते हो अगर आपने पहले वाले 6 महीने अच्छा किया हो, देन यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू to get higher salary also, but I am saying the minimum salary that you will land on will be 3.2 lakhs. Then there is lot of benefits also from day one that you get, which is life insurance coverage, accidental coverage and health insurance also, that you get day one and also from your day one of becoming a full time role. ऑल्सो यू गेट इंसेंटिव्स ऑल्सो। आप अप्रेंटाइज ट्रेनी बोल के हो, पर उस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको इंसेंटिव अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है। और ये इंसेंटिव्स छोटे मोटे नहीं है, यू कैन अर्न इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 3 times ऑफ योर सैलरी ऑल्सो। मतलब आपकी सैलरी साल भर की समझो 3 लाख है, तो वो 8-9 लाख तक भी लोग यहाँ पे इंसेंटिव कमाते हैं, काफी लोग उसके ऊपर भी कमाते हैं, पर मैं काफी लोग की बातें कर रहा हूँ। एज एन अप्रेंटाइज ऑल्सो आपकी 20,000 की भी महीने की सैलरी है तो भी आपको 50-60 हजार रुपया इंसेंटिव या 1 लाख रुपया इंसेंटिव भी महीने का कमाने का अपॉर्चुनिटी तो है। आप कैसे ग्रैब करते हो उस पर डिपेंड करता है। सब लोग उतना नहीं कमा पाएंगे, थोड़ा कमा पाएंगे, थोड़े लोग ज्यादा कमा पाएंगे, पर कमाने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ही। इसके अलावा काफी सारे कॉन्टेस्ट रन होते हैं आपके लिए, उसमें डोमेस्टिक ट्रिप्स रहते हैं इंडिया में, कहीं राजस्थान जा रहे हैं तो कहीं केरला जा रहा है तो कहीं और जगह जा रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस। अभी एक टीम गई थी दुबई, अभी दूसरी एक टीम गई थी, ये लास्ट वीक, यही वीक गई थी इनफैक्ट, अभी गई है मंडे को ही, जो जापान गई हुई है। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाने का आपको मौका मिलता है। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आपको 6 से 12 महीने में प्रमोट होने का भी मौका मिलता है।
आप प्रमोट होते हो, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको बोनस मिलता है, तो ये सबका भी काफी अच्छा मौका है. So overall, the role encompasses lot of learning and also lot of earning. तो आप सीख भी रहे हो और अच्छा खासा कमा भी रहे हो. आपके जो जो सपने आपने देखे रहेंगे कि मुझे 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, 2 साल बाद बाइक लेनी है खुद के पैसे से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप सपने आप पे काफी जल्दी पूरे कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड ऑल्सो working with a very established brand which is supported by three very big organizations is a great opportunity and a proud moment to tell your family members. जैसे मैं कह रहा था, मैंने मैंने भी बहुत बड़ी कंपनी से जॉब तो चालू किया था, पर मेरा जॉब काफी छोटा था, है ना. मैंने ब्लू डार्ट से चालू किया था, बड़ी कंपनी थी, बट मैं तो कुरियर बॉय था. I was not looked at with lot of respect within my family and friend circle, but this is a opportunity where you will be a financial manager kind of a person. So, and with an company of the financial industry, so you will be looked at with a lot of respect, a lot of dignity that you truly deserve, and you will earn that, rather than your colleagues working with some other smaller brands and fast brands in the retail sector, etc. यहाँ पे काम क्या होगा, व्हाट विल बी वो एग्जैक्टली डू. सो जैसे ये दो रोल्स हमने आपको बताए, एजेंसी वाला जो फंक्शन है हमारा, वहाँ पे यू विल गेट टीम फॉर यू. आप टीम खुद की लेके भी आओगे, आपको मिलेगी भी कुछ टीम, और उनके थ्रू आप बिजनेस ड्राइव करोगे. आप अ, उनकी ट्रेनिंग करोगे, मोटिवेशन करोगे, उनके साथ जाओगे, और उनके थ्रू आप इंश्योरेंस बेचने का जो हम लोग कह रहे थे, वो काम उनके थ्रू करोगे. आप डायरेक्ट खुद बेचने में इतने इन्वॉल्व नहीं रहोगे. आप भी रहोगे, मैं नहीं करूँगा, इतने नहीं रहोगे, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनके थ्रू आप करोगे. तो that is the kind of opportunity that you will have in agency. The other is bank assurance and direct, where what you will do is आप लोग बैंक के कस्टमर्स या फिर दूसरे कस्टमर्स के साथ आप एंगेज करोगे, और उनको प्रोडक्ट बेचने में आप बैंक को हेल्प करोगे या फिर खुद भी बेचोगे. आप काफी इन बैंक का एश्योरेंस आप मोस्टली आपके बैंक्स में ही प्लेस्ड रहोगे, यानी आपका जो यूनियन बैंक ब्रांच है या फिर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच है, या फिर और भी हमारे टाइप्स है, ऐसे आर्यवर्त बैंक है, अ, अ, या एमपी में ग्रामीण बैंक है, ऐसे काफी सारे बैंक के साथ हमारे टाइप्स है. उन बैंक्स ब्रांचेस में आप रहोगे और उधर से आप मैनेज करोगे. आपको यहाँ पे काफी बैंक के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर केयर रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, उनको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, और आप अपना MIS खुद देख पाओगे. आपको काफी सारे मोबाइल पे ऐप्स मिलते हैं कि आप वहां से लर्न कर सको, अपना परफॉर्मेंस देख सको, आप देख सको कि मैं कितना इंसेंटिव कमा चुका हूँ और कमाने का अपॉर्चुनिटी भी है. So that kind of visibility is always there. We are very tech driven as an organization. मुझे लगता है कि हमारे पास कम से कम 5-6 ऐप है जो अलग अलग चीज़ों के लिए चलते हैं. आपके सेल्स प्रोसेस के लिए भी चलता है, आपके इंसेंटिव्स के लिए भी चलता है, आपके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भी चलता है, आपको सेल्स में हेल्प करने के लिए भी दोस्त नाम का एक ऐप है जो आपको बताता है कि अच्छा, ये अगर कस्टमर है तो कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स इनको दे सकते हो. तो काफी आसान बना के रखा है. अ, जैसे आपको कोई इंस्टाग्राम सिखाने नहीं आया था और फेसबुक सिखाने नहीं आया था, या फिर टेम्पल रन भी सिखाने नहीं आया था, तो वैसे ही ये ऐप्स है जहाँ पे सीखने की भी आप खुद ब खुद ज्यादा करके चीजें सीख जाओगे. ऐसा लगता है बाहर से कि ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री काफी डिफिकल्ट होगी, वहां जाऊंगा तो कैसे चलेगा, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. व्हेन यू कम इनसाइड, पीपल हैव मेड इट वेरी simple, easy and fun to learn and to earn and to make yourself a successful professional with the organization. इसके बाद क्या होगा? हाँ, इसके बाद आपको एक नौकरी कैंपस में लिंक मिलेगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होती है जो आप डायरेक्टली खुद ले सकते हो, आपके मेल में आएगी वो टेस्ट, और आप वहाँ से खुद दे सकते हो, या फिर आप हमारे एक सेंटर पे भी जाके दे सकते हो. आपका एक इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट आपका ऑनबोर्डिंग होगा. आपकी सैलरी पहले दिन से ही 2.16 lakhs की, मैंने जो बताया वो फिगर रहेगा आपका एनएम का, और आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख का.
उसके बाद आपकी ज्वाइन होने के बाद ही इमीडिएटली 21 दिन की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे 14 दिन होंगे आपके वर्चुअल एंड क्लासरूम ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कैसे लोगों के साथ एंगेज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों पे प्रोसेसेस ये वो सब सिखाया जाएगा एकदम डिटेल तरीके से। और उसके और 7 दिन आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगी, जहाँ पे आप अपने मैनेजर्स या कलीग्स के साथ या फिर बैंक के लोगों के साथ आप उस जगह पे जाके देखोगे कि ये काम कैसे किया जाता है। 7वें मंथ से आपका कम से कम सीटीसी होगा 3.2 लैक्स पर एनम। उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी है ज्वाइनिंग बोनस लेने की, और आपको जैसे मैंने बताया आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड रहेगा, टर्म लाइफ भी कवर रहेगा और एक्सीडेंट भी रहेगा कवर। So this all things you get as a benefit. There are hardly any organizations which offers this kind of this thing. अप्रेंटाइज का हम लोग जो 18,000 रुपये देते हैं, गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया हुआ है 9,000 रुपये देने के लिए, पर हम डबल देते हैं। जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है, मोदी जी और जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो लॉन्च की हुई स्कीम है, वो कहते हैं कि वो 9,000 रुपया इनके अप्रेंटाइज की मंथली इनकम होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। But what we have said is that we will not pay 9,000. We will pay way beyond it, and we are double that amount, and we are paying 18,000 as monthly uh, to you. So, and hardly any organization pay this kind of this thing during the apprenticeship. And this is the apprenticeship is only for 6 months. If you do well in this 6 months, then I will tell you more than 70% of you will get converted into a full time resource. And बाकी बचे 30% में भी मोस्टली ऐसे लोग रहेंगे जो शायद खुद कुछ और करना चाहते हो, बट मोस्टली हम चाहते हैं कि सारे लोग जो हमसे अप्रेंटाइज बोल के जुड़ रहे हैं वो हमसे फुल टाइम बोल के भी जुड़ जाए। तो इसलिए उनको एक करियर प्रोग्रेशन कंटिन्यूअस दिखता रहेगा। आप 6 महीने के लिए यहाँ पर अभी आओगे, आप 6 महीने बाद कंफर्म हो जाओगे और आपकी सैलरी 3.2 लाख हो जाएगी। उसके बाद वापस अप्रेजल आएगा, वृद्धि आएगा, आपकी सैलरी वापस कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी। सो आप देखो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ इन इनकम एंड द अर्निंग एंड योर लेवल्स ऑल्सो, यू विल कंटिन्यूअसली गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ से वहाँ बढ़ता जाऊँ। सो दैट वाज अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। आई नो कि मैं एक साइड से काफी बोलता गया, क्योंकि ये फोरम ही ऐसा है जहाँ पे आई टॉक ऑन दी वन साइड, but that is the kind of opportunity that we have for you. I am sure most of you are excited towards this and you may have a lot of questions. So please put your questions in the comment box and we will be happy to answer those questions. Yes, thank you, Mr. Ashish, for the valuable insights. Students, we have already shared the job description link location wise in the chat box. So, request you to kindly apply if you want to start your career with Star Union Dai-ichi. Also, now we are open for the Q&A session. You may put forward your questions in the chat box. सो ये लिंक है, उस पे आप अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के बाद आपको टेस्ट आपके मेल में आ जाएगी। तो यू विल गेट मधेश्वरम, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली। सो यू विल गेट द लिंक of the test also, and you will get a call also from the organization, uh, and then or you can go to the center, nearest center or office we have, you can give a test over there also. And after that test is a small test of around 45 minutes, and it has around 50 odd questions in the test. It is a normal test which talks about what you have, uh, you know, that you basically know in graduation as a graduate also, which will have simple English, maths, logical reasoning, etc. लोकेशन या झारखंड, जमशेदपुर, हाँ ये सारे लोकेशंस में अवेलेबल है। हम लोग रांची में हैं, झारखंड में हम काफ़ी जगह पे है, बहुत सारे सिटीज़ में है अवेलेबल। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम्म अम्बेडकर नगर में भी हम अवेलेबल है, हमारी ब्रांच है अम्बेडकर नगर में।
अब अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में या क्वेश्चंस वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। हैंड रेज करने की ज़रूरत है नहीं। आप उसमें डालोगे, हम लोग जवाब देते जाएंगे। यस, वाराणसी में भी है आदित्य। वाराणसी में हमारी बड़ी ब्रांच है, उसके आजू बाजू भी सब जगह पे हमारी ब्रांचेस है। Krishna, you don't have to worry about the timing. After you apply, you will get a call also, and then you can jointly decide on your interview date. So don't worry on that. एप्लीकेशन की लिंक अरुण नीचे है, सारे लोकेशंस की लिंक डाली हुई है, जहाँ पे you can see different locations for different states. You can apply as per state. In the state, post that you will get a location के लिए भी confirmation as per your ability. Work from home का option available नहीं है। Venkatesh, you are asking the question about work from home, then that option is not available. You are freshers, graduates, and you should look at, I feel, um, going in the field and working. That's the experience, and I don't think freshers should look at this moment for work from home. Ajay, you will soon receive a mail. Don't worry. Madeshwaram, there is the link is given below on for application. You can do that. On what basis we'll select is Vaishnavi is asking. It is basic. One is you completed your graduation, which we are sure you are. You should be a fresher under this. You should not have any experience. If you are a fresher, then you are welcome. And basis you are successfully clearing the online exam, which is also a very simple exam, uh, and also the interview, which is also not a difficult interview. Understand, we are taking freshers, तो वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, and if you clear both of this, you will be this thing. Sorry, Kalai Silvi, we don't have an option for work from home as of now. Meleka Reddy, we don't have openings as of now for 12th pass. You need to be a graduate. 10 Pratika, you have given the test. So if you have cleared all the responses, you will surely get a response from the this thing. If you have cleared the test and the interview, you will surely get a call from the concerned person in Chennai. असेसमेंट टू ऑनबोर्डिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक हफ्ते में हो जाता है अजय. Working hours, someone was asking, is normal working hours, around 9:30 to 6:30. Location, you apply for the state, Shrikant, and then you can choose the locations which are favorable. First, clear the test and this thing. Then they will tell you about all the locations that are available in your state. There will be a location available in your city itself. I am sure most of the cities we have our presence. If you have seen a bank branch around of BOI, UBI, etc., then we are there surely.
CA final year students, I'm sure that you have completed your graduation, so you can apply. Rohit is asking, sir, I am from Haryana, Bhiwani, so can get job and on which basis? Basis you are clearing the online test and interview and you being a graduate, that's it. Doesn't matter you are from which location. Aniket, pharmacy students can also apply if they are, graduate, then they can apply. Aditya, you have completed your BCom, but degree abhi आई नहीं है. So if you have a provisional certificate, if your results are out, you can take a provisional certificate from your college, and through that we can hire you. I am from Himachal Pradesh. Can I get a posting? Then where will I get it? Somewhere in Himachal Pradesh also there will be an opportunity that you can get. We are there in all the states. Rohit, if you are not clear your graduation, then I'm sorry, at this moment we may not have an opportunity for you. This discussion is specifically for the graduate freshers. Deepak, if you have completed your graduation, then graduation certificate is good enough. There is no need for diploma certificate separately. Sakshi, you apply for a relevant state that you want to apply for through the link. If Himachal is as a state is not available in the link, you choose the nearest state and the person who will interview you will help you with the nearest location to your place also. So don't worry about that. We definitely have a lot of jobs in Punjab, Chandigarh, etc. Starting package for the month, as I said, is 18,000 rupees in hand. First month is 18,000 rupees. Means full month if you join. If you join mid month, obviously, accordingly. But for the whole month, it will be 18,000 rupees starting from the first day itself. Aditya, online degree, if you have completed your degree, then sub degree se hoga. You will get a link for online test after you apply for the job. Yeah, diploma passing ke option mein you can do NA, and if you are graduate, then you can put the graduation year over there. Nusrat, this is not a work from home job, it is a full time job.
2026 passed out तो नहीं हो सकते. They are in the process. So no, 2000, if you are passing out in 2026, which is next year, then you are still not a graduate, and so not possible. Anjali, no, HR internship is not available. Sakshi, you can go apply for the job, then you get selected. If you are selected, you get onboarded, get an appointment letter, and you will join then. So first you have to apply. Aditya, thank you for liking the job. We appreciate. इसके बाद वो स्क्रीन है कि इसका फोटो ले. So you can take picture of this. You can circulate to your colleagues, friends who want to apply, who are not able to attend to this. They can apply from the link that Naukri has provided. And this also gives you a brief idea about what it is. आप इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो. इसमें आपको पता चल जाता है रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से साल के बैचलर्स ये चलेगा. हमको जीरो एक्सपीरियंस वाले ही लोग चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, आप वहां भी रजिस्टर होते हो गवर्नमेंट के साथ भी. सो वहां पे एक्सपीरियंस नहीं चलता. एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने कहीं पे जॉब किया हो, आपका पीएफ कटा हो, प्रोविडेंट फंड, तो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं. यानी अगर आपने ऐसे ही कोई इंटर्नशिप की हो तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, पर आपने अगर प्रॉपर जॉब किया हो तो एक्सपीरियंस कहेंगे. वो लोग नहीं चलेंगे, फ्रेशर्स ही चाहिए. So you can apply, Ananya, you can apply there. Budalo Shrikant, thank you for applying. Sakshi, when your links are there in the chat, go to the bottom. After you apply to the link, you will get an online test link, or you'll get a call, and you will be able to take you through the next process. Shrikant, you will get a Candidates, call. No so technical we are, jobs, only sales jobs, as you provided. Thank you. I guess, we are, Vishali, we can. yeah, we are nearing the end time. So candidates, if you have any more questions, you may ask. Thank you, Aditya, for applying. You may ask your friends, colleagues. You can put this in your college groups, your community groups, society groups, etc., where maybe you may not be interested, but others, if they want, you can provide them the screenshots or this photos, and they can approach this through the links that you will provide them. Vishali, you can guide them if they are not able to see the link below. What is Yes. the other option, going on Naukri campus and see the links there. So there is the chat box where we have uploaded all the links location wise, wherein you'll be able to apply.
every state has a specific job link. So according to the state, you can select the link and you can apply. It will directly take you to the Naukri campus platform. So Ashish, I think we'll end the session Yeah. here today. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Ashish, and thank you for the wonderful audience for being a part of this webinar and for joining us today. I would request all the candidates to check your mails if you have already applied. So there will be a follow-up mail that will be shared to you on your email. We look forward to connecting with you again. Have a great day ahead. Thank you so much. Thank you, everyone. Nice connecting and interacting with everyone.